Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to another video. Today we are going to explore the parallel philosophies in divergent limbs. About the insights of the two great thinkers like Socrates and Confucius. And in the ancient tapestry of philosophy, like these two major philosophers emerged in distinct corners of the world, yet their ideas were similar, like they resonated across time and space. सो यू ऑल पीपल नो कि सोक्रेटिस का तो एक मेजर डायलैक्टिक का जो मेथोडोलॉजी थी, लेकिन ये तो क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी है ना, तो लाइक वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑन द अदर हैंड द एंशिएंट चाइनीज विजडम who have talked about in a similar way about the nature of virtue, knowledge, ethics, human condition. These were the similar philosophies that were also explained by Socrates, and that was in the ancient Greeks. And even in today, in modern times, we study the philosophies of ancient Greek philosophers, and also we take into consideration the Muslim philosophers. We study about the Eastern philosophers. So Confucius was one of the philosophers. So Confucius जो है बाद में एक religious branch भी बन गई थी, and it is still existing in China in modern day. Socrates and Confucius, parallel philosophies in the divergent realms. So both are acknowledged as pioneers of the Western and Eastern philosophy, and they share the parallel numerous philosophies in their teachings. Despite the significant temporal and geographical distance, both Socrates and Confucius, their philosophies exhibit substantial similarities. एक तो इन दोनों को जो है ना सेज का टाइटल भी दिया जाता है, फॉर देयर दे आर फेम्ड फॉर देयर विजडम. तो जो विजडम वाले लोग होते हैं या वेरी इंटेलिजेंट पीपल, सो दिस टाइटल इज़ एंटाइटल्ड टू देम. तो दोनों फिलोसफर्स की बहुत ज़्यादा रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, रिमार्केबल पर्सनालिटीज़ हैं इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी. philosophers जो हैं they have emphasized on moral virtue, ethical conduct या importance of self improvement की बात आ गई. तो their teachings have always focused on the development of an individual character. Socrates भी हमेशा अपनी philosophy में यही बात करता था, and he have contributed positively to the society. तो similarities जो है ना वो इनके ऐसे मतलब इस डायमेंशन से हैं दैट दे टॉक अबाउट ह्यूमन एथिक्स, और जो आइडियलाइजेशन ऑफ वर्चुअस लाइफ नहीं होती, उन चीज़ों के बारे में बात की गई है. तो सॉक्रेट्स एंड कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ते हैं. सो सॉक्रेट यू ऑल पीपल नो दैट ही वाज बोर्न इन एथेंस, एंड दैट वाज इन अराउंड 470 BCE. एंड वो जो है क्लासिकल पीरियड के टाइम पे रह रहा था. उस टाइम पे जो है पेलोपोनेशियन वॉर भी हो रही थी इस टाइम पे, और उसका जो लाइफ स्टाइल था दैट वाज ऑफ अ फिलोसफर लाइक हु कंटिन्यूसली गेट्स एंगेज्ड इन ओपन डायलॉग इन एथेंस. तो सॉक्रेटिस जो था उसका नॉलेज जो है दैट वाज मोस्टली सेंटर्ड ऑन क्वेश्चनिंग, डायलेक्टिक्स, मॉरल इंक्वायरी, और उसके एज सच रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे. तो हमें जितनी भी इसकी टीचिंग्स के बारे में पता चलता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज स्टूडेंट प्लाटो. तो प्लाटो ने जो है फिर आगे जाके फॉर्मल शेप दी इसकी फ़िलासफ़ी को थ्रू प्रॉपर राइटिंग. कन्फ्यूशियस जो है ही वॉज बॉर्न इन 551 BCE, जो कि स्टेट ऑफ लू जो है द प्रेजेंट डे जो है चाइना में, ये कुफू के नाम पे है ये जगह. और ही लिव ड्यूरिंग द ईस्टर्न जो पीरियड इन एंशिएंट चाइना. तो उसका जो लाइफ स्टाइल था दैट वाज ऑफ अ स्कॉलर, अ टीचर, और सिमिलरली उसने भी ही एम्फसाइज्ड ऑन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स. तो कन्फ्यूशियस जो है ही सर्व्ड इन वेरियस गवर्नमेंट रोल्स एज वेल, बट क्योंकि ही ऑल्सो फेस सिमिलर पोलिटिकल challenges. His knowledge was focused on ethics, proper governance, and the cultivation of moral virtue. So these were the similar philosophies that were also presented by Socrates when he was in Athens. Scholarly foundations and influence the educational paths of Socrates and Confucius. So Socrates and Confucius मैं बार बता चुकी हूँ कि they were separated by vast geographical and cultural distances, लेकिन फिर भी इनकी philosophy में there is a lot more similarity and scholarly foundations towards education and other approaches to the field of philosophy as well. So Socrates जो था, I'm telling you, you all people know that he was an Athenian philosopher, और उसके यहाँ सच कोई formal school या कोई ऐसा एजुकेशनल वो नहीं था, लेकिन
सेटअप नहीं था, लेकिन ही वॉज इंगेज इन फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन इन द पब्लिक स्पेसेस ऑफ द एथेंस। अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ वो जो है फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशंस करता था, और जिसको हम सोक्रेटिक डायलॉग कहते हैं। एंड दैट वाज इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग। तो सोक्रेटिस का जो एजुकेशनल का इन्फ्लुएंस है दैट इज़ प्राइमरली स्टेम्ड फ्रॉम हिज इंटरेक्शन और नोटेबल जो एथेनियन फिगर्स हैं, जैसे प्लाटो उसका स्टूडेंट था, जो कि लेटर ऑन ही ऑल्सो बिकेम अ रीओन फिलोसफर। तो उसने जो है सोक्रेटिस को डॉक्यूमेंट किया, मतलब सो वी ऑल नो अबाउट द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेटिस थ्रू प्लाटो, बिकॉज ही डॉक्यूमेंटेड सोक्रेटिस एंड हिज टीचिंग्स इन हिज डायलॉग। और सोक्रेटिस का जो टाइम पीरियड था, सो दैट वाज ड्यूरिंग द पेलोपोनेशियन वॉर। सो एथेंस और स्पार्टा जो है दे वर गोइंग थ्रू अ वेरी हार्श सिचुएशन एट दैट टाइम, एंड अ वॉर वाज टेकिंग प्लेस। बाद में जाके सोक्रेटिस को जो है उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे और उसको हेमलॉक पिलाया गया था, बिकॉज कहा था कि ही वाज करप्टिंग द यूथ एथिकली मॉरली। उसकी जो डायलॉग्स थे वो उसको यूथ को जो है करप्ट कर रहे थे। कॉन्फ्यूशियस जो है वो भी एक जो डायनेस्टी के टाइम पे जो है ही वाज गोइंग थ्रू द हार्श टाइम, और जो था कि ही वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन एजुकेशन एंड ही सर्व्ड एज अ टीचर इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द एंशिएंट चाइना। सो लाइक Socrates was existing in the ancient Greece and Confucius was in the ancient China। और जो Confucius है उसने प्रॉपरली एक स्कूल बनाया था। ही फाउंडेड अ स्कूल दैट वाज नोन एज रू, लाइक RU, और उसने इम्पार्ट किया, मतलब ही इम्पार्टेड एथिकल एंड मॉरल टीचिंग्स टू हिज disciples like students। तो Confucius जो है he was a proponent and he believed in the transformative power of education। He emphasized the importance of moral character, virtue in cultivating the ideas of a person। So these were the similar and in parallel dimension to the teachings of Socrates as well। तो Analects जो है a collection of Confucius saying and ideas, they were compiled by his followers and it also serves as a foundational text in Confucianism, क्योंकि Confucianism जो है वो एक डोमिनेंट जो है एथिकल सोशल फिलॉसफी इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल गवर्नेंस कल्चरल वैल्यूज थ्रू आउट एशिया जो है ये एक डेवलप किया गया था, एन आइडियोलॉजी नेम्ड एज कन्फ्यूशियज्म। ये बाद में मॉरल एंड एजुकेशनल फाउंडेशंस इन द चाइनीज सिविलाइजेशन, इट इज़ करंटली इवन एग्जिस्टिंग टुडे इन द मॉडर्न डे चाइना। So the similar foundational teachings were like, despite some of the differences, दोनों philosophers जो हैं they emphasized the transformative power of education and left the enduring legacies that continued to shape philosophical thought and educational systems in their respective culture spheres। क्योंकि दोनों की जो है वो सेम थी। They talked about ethics, morality, they talked about education, they talked about virtue, governance, cultural values and a person who can be the best version of himself। तो like हर इंसान को चाहिए कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो है एक बहुत अच्छा इंसान बने, बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। Turning points and paradoxes, the crucial events in the lives of Socrates and Confucius। अच्छा, Chaerephon जो था he was a friend and a follower of Socrates। He was very loyal friend to Socrates। So he once told Socrates that no one is wiser than Socrates, and to that Socrates paradoxically said that all I know is that I know nothing। अब ये सेंटेंस जो है ना, इट इज़ अ पैराडॉक्स। नाउ व्हाट डज पैराडॉक्स मीन? इसका ये मतलब है कि एक ही सेंटेंस में दो चीज़ें आए, बट दैट इज़ इन ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट। सो लाइक ही इज़ एट द सेम टाइम ही इज सेइंग ऑल आई नो, and on the other hand he's saying that I know nothing। So this is a paradox statement। तो यहाँ से जो है फिर this was a turning point in Socrates' life because this was his emergence as a prominent figure in the Athens and to his unique method of philosophical inquiry। इसके ने आज सच कोई teachings नहीं थी इसकी। he never wrote down his knowledge, but उसका जो pupil था प्लाटो, उसके डायलॉग्स के थ्रू जो है हमें पता चलता है Socrates की teachings के बारे में। And this very sentence and a statement given by Socrates, it became the paradoxical assertion, it became a cornerstone of his philosophy, emphasizing the importance of questioning the self-reflection and intellectualism। Confucius का एक important काम था, and that was the mandate of heaven, and that was that is still a Chinese political ideology which talks about justifying the right to rule for the one emperor। So it says that if there's one heaven, so there should be one emperor and he has the right to rule and he's
blessed, like, so all the blessings of God is directly sent on the emperor एंड द रूलर इज़ हैविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो ये चाइनीज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो इसके और कन्फ्यूशियसिज्म जो है वो भी सिमिलर आइडियोलॉजी पे काम करती है। तो मैंडेट ऑफ हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो कन्फ्यूशियसिज्म से सारा रिलेटेड है, या कन्फ्यूशियस ने प्रेजेंट किया था। तो पैराडॉक्स जो है ना यहाँ पे, इट लाइज इन कन्फ्यूशियस एडवोकेसी फॉर मॉरल गवर्नेंस डिस्पाइट हिज स्ट्रगल्स टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज इफेक्टिवली ड्यूरिंग हिज टाइम। तो कहा तो था कि लाइक देयर शुड बी वन एम्परर, ही इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन फ्रॉम गॉड, इफ देयर इज़ वन हेवन देयर शुड बी वन एम्परर, सो यू नो, बट he should work in moral governance. सिग्निफिकेंस ऑफ वर्चू इन द फिलोसफीज ऑफ सॉक्रेटिस एंड कन्फ्यूशियस। तो वर्चू का मतलब मैं समझा देती हूँ कि यू नो इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अगर किसी में गुडनेस है बहुत ज़्यादा, किसी में मोरालिटी का सेंस बहुत ज़्यादा, एथिकनेस है उसके अंदर, सो वी से दैट ही इज़ वेरी वर्चू, या ही इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वर्चुनेस, राइट। तो सॉक्रेटिस के मुताबिक जो है वो तो था कि लाइक वर्चू इज़ नॉलेज, क्योंकि वो कहता था दैट if people get knowledge, if the knowledge is imparted to them, so the people would act virtuously, like if they truly understand and understood that what virtue was, because Socrates he was not very static in quality, because वो कहता था कि वर्चू का जो है इट इज़ अ प्रोसेस, वेरी डायनामिक प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ग्रोथ, क्योंकि वो कहता था कि लोगों को चाहिए कि अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करें, बिकॉज एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो वो कहता था कि इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस एंड दैट पीपल शुड इम्प्रूव देमसेल्व्स, एथिकल इम्प्रूवमेंट टाइम टू टाइम होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड कन्फ्यूशियसिज्म या कन्फ्यूशियस जो है उसके लिए वर्चू इज़ अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो कहता था कि लाइक द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ टू बिकम अ वेरी एग्जाम्पलरी पर्सन ऑफ मॉरल कैरेक्टर, और ऐसा वर्चू जो है ना, मतलब सच एज काइंडनेस, पाइटी, सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, कंपैशन, दीज शुड बी द क्वालिटीज़ इन अ ह्यूमन। तो कन्फ्यूशियस जो है ही एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग वर्चू थ्रू एजुकेशन, रिचुअल्स, एथिकल कॉन्डक्ट, और वो कहता था कि इंडिविजुअल्स को जो है दे शुड कंट्रीब्यूट टू अ हार्मोनियस एंड अ वेल organized or ordered society. So for both Socrates and Confucius, virtue was not only a set of rules, but it was a transformative concept that shaped individuals and societies. वो कहते थे कि significance of virtue lies only in its ability to guide moral decision making, ठीक है। foster करना चाहिए harmonious relationships को, जो कि contribute करें overall you know the well-being of a community। तो virtue जो है उनकी philosophies में was not only talked about in terms of personal achievement, but also a social responsibility, that one that brings about more just and ethical worlds. दोनों जो फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने जो अपनी फ़िलासफ़ी प्रेजेंट की थी, सो दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट्स एप्लीकेशन इन द डे टू डे लाइफ। तो सॉक्रेटिस का जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ थी जो हमें प्लेटो के थ्रू पता चलती हैं, अगर आइडियल थी या रियलिस्ट थी, मतलब वो कहता है कि वन शुड बी अ वेरी गुड ह्यूमन। सो सेम गोज़ फॉर द कन्फ्यूशियस एज वेल, दैट वो तो अब एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस या एक आइडियोलॉजी सी बन गई है चाइना में, एजुकेशनल, मॉरल। तो कन्फ्यूशियस भी जो है कि he have talked about that a person should become very good human. Revitalized impact Socratic teachings and Confucius resurgence in the modern education. तो क्योंकि सॉक्रेटिस का जो टीचिंग मेथड था दैट वाज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग डायलॉग जो होता है ना, तो पेडागॉगिकल अप्रोचेस थी, एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट इंगेजमेंट, ये इस तरह की चीज़ें थी। ये सॉक्रेटिक एजुकेशनल प्रिंसिपल्स थे। तो इसी तरह जो है फिर इट एम्फेसाइजेस द ऑन द, मतलब सॉक्रेटिस की जो टीचिंग्स थी या उसका जो मेथड है वो एक एम्फेसिस प्रोवाइड करता है ऑन द एग्जामिन्ड लाइफ। बोथ कन्फ्यूशियस एंड Socrates philosophy they highlight the importance of ethics in education. इन दोनों फिलोसफर्स ने एम्फेसिस दिया था ऑन द वर्चू एथिक्स। दे हैव टॉक्ड अबाउट ग्लोबल सिटीजनशिप एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक होलिस्टिक एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और बाद में लीडरशिप और गवर्नेंस के से रिलेटेड जो है एथिकल गवर्नेंस एंड कल्टीवेशन ऑफ अ वर्चुअस लीडर। तो ये मॉडर्न डे एप्लीकेशंस हैं दो फिलोसफर्स की इन द मॉडर्न टाइम्स। So this marks the end. We'll meet in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye, and like my video and subscribe to my channel.